So now again, so we talked about size, we talked about mass. Atoms मिलते कहाँ हैं, कैसे होते हैं? Okay, how do the atoms exist? Now the question comes, how do atoms exist? So the atoms of only a few elements अकेले रहते हैं atoms, otherwise atoms एक दूसरे के साथ ग्रुप में रहते हैं, मिल के रहते हैं. Okay, उसको हम क्या कहते हैं, molecules form में. So the atoms of only few elements, कुछ elements ऐसे हैं जिसको हम कहते हैं noble gases. Noble gases, they are unreactive and they exist in free state. अकेला अकेला atom रहेगा, but otherwise the atoms combine in a group of 2, 3, 4 and they live together. Okay, so atoms of most of the elements are quite reactive and do not exist independently. So they form molecules or ions. Ions also we will talk about. They form molecules or ions which aggregate in large numbers to form the matter. So they combine to form a molecule, or they also combine by forming ions. They convert into ions and then they combine. Okay, so we will talk about that all. समझ में आएगा धीरे धीरे आगे सब चीजें. So atom generally molecules के form में या ions के form में बनने के बाद combine होके फिर रहते हैं. तो they exist in clusters in the form of molecule or ions. Okay, and then they form a compound substance matter जिसको हम देख सकते हैं. So atom कैसे exist करते हैं? कुछ elements हैं जो noble gases है, like helium आएगा, argon आएगा, xenon आएगा, कुछ ऐसे noble gases है जिनके atoms अकेले रहते हैं. They remain individual, but otherwise different elements, the atoms combine to form a group, two or more than two atoms combine to form a molecule, or they form ions and make compounds to become stable. Okay, we are going to discuss about that also. So how do they exist? Now when we talk about molecules, when they combine, so how do the atoms exist? Clear? So there are two options for atom in the form of molecules. या तो अकेले रहेंगे, लेकिन अगर वो ग्रुप बनाते हैं तो they will combine to form in the form of molecules or in the form of ions. They will exist in two ways, in the form of molecules or in the form of ions. Molecules आपस में जुड़ जुड़ के फिर पूरा एक matter substance बनाएगा. Like here we are having iodine, एक iodine का substance है. Atom आपको नहीं दिख रहा है, atom build हो के एक बड़ा structure बन गया पूरा ये. और यहाँ पे एक compound है हमारे पास सोडियम क्लोराइड का. एटम जो था वो पहले आयन बना, आयन बन के आपस में कंबाइन होके आयन बन के आपस में जुड़े हैं एंड दे फॉर्म्ड अ कंपाउंड ओवर हियर. ओके, सो दिस इज एटम्स कंबाइंड एंड यू आर नॉट सीइंग दैट एटम ओवर हियर, आपको तो पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे पूरा. ओके, सो दे कैन फॉर्म मॉलिक्यूल और आयंस. व्हेन यू टॉक अबाउट मॉलिक्यूल्स जनरली, व्हाट इज अ मॉलिक्यूल? नाउ मॉलिक्यूल इज अ ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम्स. A molecule is a group of two or more atoms of same type or different type. Same type of atoms can also combine, or different types of atoms can also form a group. Okay, so same or different, chemically bonded together. They are bonded means they are attached to each other by strong attractive forces. How does that force develop? We'll talk about that also. But for a molecule, two or more than two types of atoms, same type or different types, they come together, they bound to each other by some forces, attractive forces, and they form a molecule. Or you can also say a molecule is the smallest particle of an element. कोई भी element और compound का जो सबसे smallest stable structure है, smallest stable structure, that is molecule. So it is the smallest particle of an element or a compound which can exist freely under ordinary conditions and shows all the properties of that element or compound. उस मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज भी वो सारे होंगे जो उस मैटर का होगा. ओके, सो वी हैव मॉलिक्यूल्स, टू और मोर देन टू एटम्स कंबाइन टू फॉर्म दिस स्ट्रक्चर. ओके, सो इट कैन बी फॉर्म्ड आइदर बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स ऑफ द सेम और ऑफ डिफरेंट. बताया अभी हमने, जो कंबाइन हो रहे हैं वो सेम एटम्स भी हो सकते हैं या डिफरेंट भी हो सकते हैं. तो अगर सेम एटम है देन द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट. इफ द एटम्स आर डिफरेंट देन इट फॉर्म्स अ मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड. जो दो एटम्स या दो से ज्यादा एटम्स आपस में जुड़ रहे हैं, इफ ऑल आर सेम देन इट इज द मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट. एलिमेंट, ओके, वन टाइप ऑफ एटम ओनली. इफ द एटम्स आर डिफरेंट टाइप्स देन वी कॉल इट एज अ मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड. लेट्स सी, लेट्स अंडरस्टैंड देम. व्हाट डू यू मीन बाय मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट और मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड? ओके, सो व्हेन वी टॉक अबाउट मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स, so elements is when the molecule of an element is, it contains two or more than two atoms of same kind, similar atoms combined together, similar identical atoms combined together
एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं, द नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज एटॉमिसिटी. if I ask you the atomicity of a molecule, तो अंदर कितने एटम्स है एक मॉलिक्यूल में, काउंट करो, दैट इज द एटोमिसिटी. ओके, डिपेंडिंग अपॉन वेदर द मॉलिक्यूल कंटेन्स 1, 2 or 3, 4, it can be called as monoatomic molecule, diatomic, triatomic. chemistry में mono means 1, di means 2, tri means 3, tetra means 4. so we can name them monoatomic molecule, diatomic, triatomic and so on. If you see these molecule structures a little bit over here, कुछ एक एग्जांपल है हमारे पास. वी हैव अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन. नाउ हाइड्रोजन ओवर हियर यू कैन सी देयर 2 एटम्स आइडेंटिकल, तो ये एलिमेंट है. सो अ मॉलिक्यूल ऑफ, वी आर टॉकिंग अबाउट मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स ओनली. सो मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन कंटेन्स 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन, वी राइट इट H2. कितने एटम है इसमें, 2 एटम्स कंबाइन एंड फॉर्म अ स्ट्रक्चर अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन. इसकी एटोमिसिटी, देयर आर 2 एटम्स, एटोमिसिटी इज 2. इट इज अ डायएटॉमिक मॉलिक्यूल. 2 means diatomic. Okay, it is a diatomic molecule, its atomicity is 2. Same you can see for nitrogen gas also. Nitrogen also you can see 2 atoms of nitrogen combining to form a molecule of nitrogen. 2 है, atomicity कितनी होगी 2, क्योंकि 2 एटम है. किस टाइप का मॉलिक्यूल है ये, डायएटॉमिक, 2 के लिए डाई. सो इट इज अ डायएटॉमिक मॉलिक्यूल हैविंग 2 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन. दोनों एटम एक जैसे ही है, इट इज एन एलिमेंट. Okay, so these are molecules of an element, identical atoms combined. Okay, they are combined. अभी combined कौन से forces है वो भी हम बात करेंगे अभी. Okay, some more examples we can have a look. Molecule of oxygen. Now oxygen again we write O2. तो O2 से ही आपको समझ में आ जाएगा, O2 means 2 atoms of oxygen combined to form a molecule of oxygen. It is diatomic and the atomicity is 2. All diatomic molecules atomicity is 2. Simple. Chlorine again Cl2, 2 atoms combined and gives you a diatomic molecule of chlorine. Okay, quite simple molecules जो भी है. These all are molecules of element. More you can have. There were 2, 3 oxygen that makes ozone. Ozone formula is O3. Formula से पता है there are 3 atoms oxygen. Okay, so its atomicity is 3. It is a triatomic, TRI, triatomic molecule. हो गया. Here you can see for phosphorus P4, 4 atoms of phosphorus combine to give you 1 molecule of phosphorus. So it is a tetraatomic, 4 एटम मिलके बन रहे हैं, तो इट इज टेट्राएटॉमिक. इसकी एटोमिसिटी कितनी होगी 4. इट्स एटोमिसिटी इज 4 बिकॉज दे आर 4 एटम्स इन 1 मॉलिक्यूल. तो आगे समझ में हाउ टू फाइंड एटोमिसिटी, हाउ टू नो इट इज मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक और ट्राइएटॉमिक. ओके, सल्फर, एक सल्फर ज्यादा मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको हम कहते हैं पॉलीएटॉमिक. सल्फर जो है हमारे पास, इसके पास 8 एटम होते हैं, 8. ओके, यहाँ आगे पीछे है, 3 डायमेंशनल व्यू में आपको पूरे नहीं काउंट हो पाएंगे. द 8 मॉलिक्यूल्स 8 एटम्स कंबाइन टू फॉर्म 1 मॉलिक्यूल, तो इट्स एटोमिसिटी इज 8. पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल. ओके, मोनो डाई ट्राई नहीं, इट्स पॉली. 8 के लिए हम पॉली लगा देते हैं, 5, 6, 7 के लिए हम पॉलीएटॉमिक कह सकते हैं. Okay, so these were the molecules of elements. Okay, so the atomicity, हाँ, metals के भी molecule होते हैं. So metals generally we have monoatomic molecules like sodium, magnesium, calcium, copper, iron. Okay, they all have atomicity 1. They have a molecules, 1 atom makes 1 molecule. Even the atomicity of carbon, carbon also has the atomicity 1. Single carbon we have a molecule. Sulfur has 8 polyatomic molecule, अभी हमने डिस्कस किया. इसके अलावा जो नोबल गैसेस है, मैंने कहा था नोबल गैसेस विच रिमेन इंडिपेंडेंट, वो किसी से जुड़ते नहीं, अकेले रहते हैं, तो उनकी एटोमिसिटी भी क्या है 1. विच नोबल गैसेस, यू हैव हीलियम, नियॉन, एर्गॉन, क्रिप्टन एंड जीनॉन. तो दीज आर सम ऑफ द नोबल गैसेस हु हैव एटोमिसिटी 1. ओके, दे आर ऑल मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स. मेटल्स आल्सो मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल, दिस नोबल गैसेस आल्सो मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल, प्लस कार्बन इज आल्सो हैविंग मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल है हमारा. Okay, so these things you should remember. Okay, a simple, you can see a few over here, diagram given to you. It is argon monoatomic, helium is monoatomic, hydrogen diatomic, oxygen diatomic, chlorine is diatomic, ozone 3 triatomic, phosphorus tetra. Tetra means there is some misprint, कभी हम बना सकते हैं इसको. Tetra means it is having 4.
4 atoms of phosphorus make it, so that it is a tetra atomic, and then you have sulfur octaatomic. Octa 8 के लिए use करते हैं, but I can write polyatomic also. So polyatomic molecule is over here. So this way we can, by just seeing the symbol I can say it is mono, di, tri or poly करके हम symbol से बता सकते हैं इसके अंदर कितने atoms का एक molecule बन रहा है. Okay, so molecules it can be of, ये सब elements के हैं. Okay, क्योंकि सब में एक ही टाइप के atom है, अलग अलग टाइप के atoms हमने use नहीं किया है. तो सेम टाइप ऑफ एटम से जब molecule बनता है we call it as molecule of elements. But if you have different types of atom, then we say molecules of compounds. Like here you can see we are having over here H and Cl, HCl molecule. One is H, one is Cl. Two different types of atoms combined to form one molecule. This is a molecule of compound. The compound is HCl. Here we are having H2 and O. H2O. Here you are having CO2. Okay, carbon dioxide, C1C and 2O. So what do you have over here? These are called molecules of a compound, and it is always fixed. Molecule of a compound CO2 कहीं भी उससे ले आओ, it will always be CO2. यानी कि यहाँ पे कहीं 3 ऑक्सीजन आ जाएंगे, कुछ आ जाएंगे. Fixed CO2 for carbon dioxide. So it is a compound. So ratios are fixed, number of atoms are fixed. So this is an atom of, this is a molecule of water, molecule of carbon dioxide, molecule of HCl. Okay. कौन से मॉलिक्यूल है ये? मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स. कंपाउंड्स, व्हाट इज द कंपाउंड इन विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स कंबाइन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल. एलिमेंट्स, सेम टाइप ऑफ एटम्स कंबाइन, हियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंबाइन. ओके, सो दिस वे हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट इन द टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स. इसके बाद हमारे पास आता है आयन फॉर्म में. एटम्स ऑल्सो एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ आयंस. हमने कहा था आयंस. नाउ व्हाट आर आयंस, विल सी नाउ. ओके.